Hello student, welcome back. In today we will discuss about SCF and LCM part. In previous videos we had discussed about SCF, right? And what is the meaning of SCF or GCF? So let us we will revise once again. So SCF is equal to highest common factor and GCF greatest common factor. So SCF is also called as the greatest common factor, right? And how to find out SCF? So SCF we have a two step, that is the first step, that factorizations method, and factorizations method based on multiple of prime numbers, and second step, that is a division method, and division method is based on divisibility rule. So in previous videos we detailed study about a factorizations method. So in today we are focusing on division method, and I hope that you would be revise the divisibility rule. If you don't watch in earlier, so please watch firstly divisibility rule, then you will easy to solve SCF questions, right? So we move on the questions. So example number first, find the HCF of 16 and 28, right? So this is a example that first. So first we will discuss about factorizations, and then we will discuss the division method, and then we choose which is the best for us, right? So first discuss, that is a factorization. So first number is equal to 16, right? So 16, 2 8 is 16, right? So 4 4s are 16, but 4 is not a prime number, so that's why we again break 2 2s are 4 and 4 2 2s are 4, right? So this is the factorizations of 16. So next number would be, that is the 28. So 4 into 7, that is the 28, right? So 4 is not a prime, so that's why we will break 2 into 2 and 7 as it is. हमने पिछले क्लास में देखा है, जब भी प्राइम नंबर आता है वहीं पे स्टॉप किया जाता है। यदि प्राइम नंबर नहीं आते तो प्राइम नंबर आने का प्रयास किया जाता है, राइट? अब यहाँ पे दोनों को करेंगे कंपैरिजन। सो 16 और 28, इन दोनों नंबर्स में, यानी इस दोनों सीरीज में कौन से नंबर्स कॉमन है? सो सबसे पहले इस 2 की बात करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो आई विल राइट 2, right? So next, that is that again 2, so यहाँ पे 2, here 2, so I will write again 2, here 2, but not here, so that's why we don't take 2 common. सो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। अगेन 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, कॉमन नहीं लेंगे। सो तो हमारे पास क्या मिला? 2 into 2, so that's why HCF of 16 and 28, that is a 4. So this is the first step of first method of factorization. So second method, which that is a division method. Which method? Division method. So we have two numbers. Which two numbers? That is a 16 and 28. So we have two numbers, that is a 16 and 28, right? So first I will put all the values, that is 16 and 28, and I sketch the horizontal and the vertical line, right? अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, when we will solve such type of question, firstly we would be know about, we start sequence wise, so 2 3 4 5 6 and so on, right? हम जब भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करना है। we must follow sequence as a prime number, right student? ये बात ध्यान में रखिएगा। we always be remember that such concept. सो यहाँ पे 16 है तो मैं यहाँ से 2 से कॉमन ले लेता हूँ। वाई 2? बिकॉज बोथ नंबर्स आर इवन। सो 2 8 16 and 2 14 28. Is this clear student? So I will take common, that is 2. 2 8 16, 2 14 28. Again 8 and 14 are even values, so that's why I will take 2 common. So 2 4s are
8 and 2 7s are 14, right? 2 7s are 14. अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है. सो 4 and 7, तो 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. जब दो नंबर आए और 3 नंबर्स और हो सकते हैं कि 4 नंबर्स, लेकिन इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं है. कॉमन मतलब उसमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड हो सके. In here both two numbers are different and we will not divide or we will take a common number between these two numbers. So that's why I stop here. तो मैं यही रुक जाता हूँ. अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं कि लेफ्ट साइड में that is 2 and that is 2. तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा HCF of 16 and 28 is equal to, so left side में 2 into 2, so that's why HCF is equal to 4, right? So that is the previous method, that factorization, and this new method, division method. So division method are so easy because we easily calculate within seconds, and in factorizations method we solve within minute. So here minute, here second. So that's why we always prefer for calculate HCF, that is the division method. Okay, so we move on next example. So example number 2, find out HCF of 16 and 36. So again find out the HCF of 16 and 36. So I have 16 and 36 numbers, right? 16 and 36. So I draw a sketch or line, vertical and horizontal. So both two numbers are divisible by 2. So divisible by 2. So that's why I will take common 2. So 2 8s are 16 and 2 18s are 36. Is this clear, student? So again here 8 18. So both two numbers that is divisible by 2. So again I will take common, that is 2. So 2 4s are 8 and 2 9s are 18. Right? अब यहाँ पे देखिए here 4 and 9. So 4 is the even values, 9 is the odd values. So those two numbers are different. So that's why we will not take any common numbers. So that's why I stop here. तो मैं यही रुक जाता हूँ. So HCF of 16 and 36 is equal to, लेफ्ट साइड में कौन से नंबर लिखे थे, that is 2 into 2, so that is 4. So HCF of 16 and 36 is equal to 4. I think आपको ये क्लियर हुआ होगा, right? अब हो सकता है इस पॉसिबल दैट सच नॉट सच many students think about, so sir why we will not taken that is 4 between those two numbers. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 क्यों कॉमन नहीं ले सकता. और 4 लेंगे तो भी आंसर आएगा 4 4s are 16 and 4 9s are 36 and 4 and 9. देखो यहाँ पे भी 4 and 9, यहाँ पे भी 4 and 9, तो हम 4 से क्यों नहीं कर सकते. सो मैं यहाँ से आपको ये कहना चाहूँगा कि आंसर तो आपका 4 ही आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी. बट रूल क्या कहता है, रूल सेज वी डिवाइड बाय दैट इज अ सीक्वेंस. We always follow sequence and we divide directly. So this step is not followed directly. Okay student, कभी भी ऐसे डायरेक्ट से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना. जो भी करना है सीक्वेंस वाइज ही करना है. सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, सीक्वेंस वाइज ही जाना है.
सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड आउट द HCF of 12, 24 and 30. Right, so first I have three numbers. Which three numbers? That is 12, 24 and 30. Right, then I draw a line, horizontal and vertical. Okay, so focus on those three numbers are odd values or even values. So those three numbers are even values, so that's why divisible by 2, divisible by 2. right, तीनों नंबर्स ए इवन वैल्यूज है, जिस वजह से ये डिविजिबल बाय 2 से होंगे। सो आई विल टेक कॉमन, दैट इज 2. सो 2 6 12, 2 12 24, 2 15 30. राइट, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप पे 6 12 15। अब यहाँ पे तो ये तीनों के यहाँ पे देखिए 6 एंड 12 ये तो इवन वैल्यूज है, लेकिन 15 यह एक ऑड वैल्यूज है और यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 का रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम करेगा डिविजिबल बाय 3. So divisible by 3, so that's why I will take on common, that is 3. So 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Right, 3 5s are 15. So here 2, here 4, here 5. So 5 is a prime number, so that's why I stop. So HCF is equal to left side में that is 2 and that is 3. So 2 multiple with 3 is equal to 6. So that's why HCF of 12, 24 and 30 that is a 6. That is a 6. I think आपको ये clear हुआ होगा। Example number 4, find out HCF of 30, 40 and 60. So I have three numbers. Which three numbers? 30, 40 and 60. Right, 30, 40 and 60. I draw a line, horizontal and vertical. So those three numbers are even, so that's why divisible by 2. So यह तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, that's why I will take on 2, that is common between three numbers. So 2 15s are 30, 2 20s are 40, 2 30s are 60. Right, 2 30s are 60. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब डिविजिबल 2 के बाद किसका नंबर आना चाहिए? 3 का, लेकिन यहाँ पे 3 से डिविजिबल 15 है, 30 है, बट नॉट 20. अगेन 4 का, सो 4 से तो 20 जा रहा है, सिर्फ एक ही नंबर. उसके बाद 5 का, सो डिविजिबल बाय 5, बिकॉज ये तीनों नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं? दैट इज 5. सो आई विल टेक a common, that is 5 between those three numbers. So 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 6s are 30. Right, so 4 is not prime number, 6 is not prime number, but 3 is a prime number, so that's why I will stop. मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा. सो HCF कितना मेरे पास? HCF इज इक्वल टू, सो लेफ्ट साइड में 2 and 5, सो हियर 2 मल्टीपल विथ 5, दैट इज 10. सो HCF इज इक्वल टू 10. अब आप सोच रहे होंगे कि सर HCF का एक्चुअली मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशंस ऑफ HCF? सो स्टूडेंट यहाँ पे समझिए कि HCF कितना निकला? 10. सो इन तीनों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड हो सके, जो तीनों को डिवाइड होता हो? इन तीनों नंबर्स को
कौन सा नंबर है जो डिवाइड होता है? तो इसका आंसर है 10। कौन सा आंसर है? 10, जो 30 को भी डिवाइड होता है, 40 को भी डिवाइड होता है और 60 को भी डिवाइड होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ HCF। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर यहाँ पे तो 2 से लिया, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, उसके बाद 5 आना चाहिए, आपने 5 डायरेक्ट क्यों यूज किया? ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट HCF में, HCF क्या कहता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ HCF? HCF में हमें जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, उन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो उन नंबर्स में कॉमन है? जैसे यहाँ पे 15, 20, 30, तो इन तीनों नंबर्स में, तीनों में, नॉट इन दोनों में, तीनों नंबर में ढूंढना है। वी फाइंड आउट ए होल नंबर हु इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 3 numbers. So that's why I will choose 5. Why choose? Because I know divisible by 5. So that's why you should have to watch divisibility rule. That's why you will easy to understand HCF and LCM part or calculations part. Right? So we move on next example. So example number 5, find out the HCF of 8, 12, 20 and 36. So in these questions we have 4 values. Which 4 values? 8, 12, 20 and 36. So student, can you imagine a which number who is directly divisible by 4 numbers? क्या हम ऐसे माइंड से सोच सकते हैं कि इन चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों को डिवाइड हो सके? कैन यू इमेजिन? कुड वी इमेजिन दैट विच नंबर्स हु इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स? ओके, so we move on our step. So all numbers are even values, so that's why I will take common 2. I will take common, that is 2. So 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 10s are 20 and 2 18s are 36. 2 18s are 36. So again we think about all numbers, then we will know we found all numbers are again even values, so that's why we easily divide by 2. So that's why I will take common factor, that is 2. I will take a common factor, that is 2. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 2 9s are 18. So here prime number, here prime number, here prime number. When you get a prime number, when you get a single prime number, then you directly stop. तब आप यहाँ पे रुक ही जाइए। तो यहाँ पे मैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल स्टॉप, आई स्टॉप हियर। वाई वी से डायरेक्टली, क्योंकि प्राइम नंबर के बाद तो हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते। वी कुड नॉट फाइंड आफ्टर द प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर डेफिनेशंस, प्राइम नंबर्स आर ए होल नंबर हु इज डायरेक्टली बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही डिवाइड हो। दैट्स वाई वी स्टॉप हियर। सो HCF इज इक्वल टू, सो लेफ्ट साइड में 2 multiple with 2, so that's why 4. Again we will check out, so 8 12 20 and 36. so 4 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड होता है। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 से सभी नंबर्स को डिवाइड होता है ना। सो दैट्स वाई HCF of all numbers, that is 4. आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप इस डिवीजन मेथड से भी परिचित हो गए होंगे। यू विल फैमिलियर विद डिवीजन मेथड, राइट? यू वुड हैव फैमिलियर विथ डिवीजन मेथड,
right? So we move on next example. So example number 6, find out the HCF of 12, 18 and 24. So we have three numbers, that is the 12, 18 and 24, right? I have 12, 18 and 24, so I will draw a line that is a horizontal and verticals. Then we find out all those three numbers are even values, so that's why we will divide by 2 easily. So I will take a common factor, that is 2. So 2 6 are 12, 2 9 are 18 and 2 12 are 24. 2 12 are 24. Again, so 6 and 12 are even values, but 9 is a odd. So then we move on divisible by 3. So all three numbers are divided by 3. So I will take a common, that is 3. So 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Right. So student, we will get prime numbers. So that's why I stop here. So HCF is equal to left side में 2 into 3. That's why 6 is a HCF of those number. लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं उनका हम ऑलवेज भी मल्टीपल करते हैं विथ ईच अदर. So we will get the answer, that is 6, right? So we move on next example. So example number 7, find out the HCF of 16, 80 and 48, right? So I will write 16, 80 and 48. So I will draw a vertical and horizontal line. All three numbers are even values, so that's why I will take common, that is 2. So 2 is 16, 2 40 is 80 and 2 24 is 48, right? Again all three numbers are even values, so that's why I will take common, that is 2. 2 4s are 2 20s are and 2 12s are, right? So again those three numbers are even values, that's why I will take common factor, that is 2. 2 2s are 2 10s are 2 6s are, right? Again all three numbers are even values, so that's why I will take again factor, that is 2. 2 1s are 2 5s are and 2 3s are. So 5 is a prime number, 3 is a prime number, so that's why I stop here. So HCF is equal to, so लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स है, that is 2 multiple with 4 times. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16. So 16 is a HCF of all those numbers, है ना स्टूडेंट. अब यहाँ पे ये मिस्टेक मत कीजिएगा. कौन सी मिस्टेक सर, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? आप कर तो सकते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा सही हो. आपका आंसर हमेशा सही हो. सो दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर और फॉलो द सीक्वेंस रूल, राइट? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आई विल नॉट गारंटीड your answer always be right. Sorry student. So we move on next example. So example of HCF for find out the HCF 45 and 108, and here are available 4 options, right? So I have two numbers. Which two numbers? That is 45 and 108, right? So 45 and 108, that is the odd values, even values, so not divide by 2. Next number would be, that is divisible by 3, divisible by 3. So I will take common, that is 3 numbers. So 15 3s are 45, 3 3s are 9 and 3 6s are 18, right? 3 3s are 9 and 3 6s are 18. So again 15 and 36 are even and odd values, but those two numbers are divisible by 3.
divisible by 3. Why we will choose 3? Because I know that the divisible rule. So that's why you should have to know about divisible rule. So 3 5s are 15 and 3 1s are 3 2s are, that is 12 3s are, right. So we will get 5. That's why 5 is the prime number. So that's why I stop here. So HCF is equal to 3 multiple with 3 and is equal to 9. So option C is the correct answer. C is the correct answer, that is a 9. 9 5s are 45 and 12 9s are 108. 9 5s are 45, 12 9s are 108. 5 9s are 12 9s are. Is this clear student? क्या आपको HCF पार्ट समझ में आ गया? HCF कैसे निकालते हैं? चलिए और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. So this is the last questions of today's lectures, and I think these all questions are enough for practice for HCF. So that's why this is the last question. So I have three numbers, that is the 140, 168 and 224. So I will draw a line. So that's why, okay, so I will draw a line, horizontal and a vertical. So 140, 168 and 224, that is the all three numbers are even value. So that's why I will take common 7. So 270 2s are 140, right. So 2 8s are 16 and 2 4s are and 84, 2s are 168, 112. So 112 into 2, that is a 224, right. Again all three numbers are even values. So that's why I will take common 2. ये तीनों values even है, that's why we will choose 2, common factor 2. So 235s are 70, 2 4s are 2 2s are 2 5s are 10, carry 1 2 6 are 12. So 56. So 35, 42, 56. So 2 3 5 7, राइट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा. सो नेक्स्ट नंबर वुड बी दैट इज अ 7. सो आई विल चूज या आई विल टेक कॉमन फैक्टर अमॉन्ग्स those three numbers, that is 7. 7 5s are 35, 7 6s are 42 and 7 8s are 56. 7 8s are 56 and we will get that is a 5. 5 is a prime number. So that's why I stop here. आपको जब भी whenever you will get a prime number, so then you will stop now, right. So that's why I will stop here. So HCF is equal to left side में 2 into 2 and 4. So that's why 28 is the answer. That's why option B is the correct answer, 28. मुझे लगता है आपको ये समझ में जरूर आया होगा, लेकिन तब भी however you have any doubt, any queries or any questions, remarks of today's lecture, so please write in comment sections box, and I want a valuable suggestions from your side. Also write in comment sections box. So we will meet on next videos. Till then, take care students, and join us our channel, subscribe our channels and share to your group circle. So thank you student, thank you so much. Bye bye.